Hey students, hi, good afternoon. So today's topic is principles of labor welfare. ठीक है, तो आज का topic ये है. And the things that you will be studying today in the principles would be similar, somewhat similar. ठीक है, what you have studied in the past 2 days, but yet these are principles. Okay, ये एक different topic है, but कुछ similarities आपको समझ आ जाएंगी. ओके, बट यू हैव टू स्टडी बिकॉज कई बार प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लाइनर दे दिया और पूछा ये कौन सा प्रिंसिपल है. सो दैट इज वाई यू शुड नो दीज ऑल्सो. ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर UGC नेट कोड 55. And yes, MBA HR students can also benefit for it, and the people who are preparing for various HR exams, so they can also benefit from it. And yes, I have a group called HR with Sanchita on Telegram, which is very important to join. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती हैं. साथ के साथ पीपल आर वॉचिंग द वीडियोस बट नॉट सब्सक्राइबिंग, तो आपको सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देन यू विल नॉट गेट द अपडेट्स जो भी मैं रोज डालूंगी. एंड स्पेशली HR विद संचिता, तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए टेलीग्राम. आई विल पिन इट इन द कमेंट्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So yes, these are all the principles that we are going to study today. These are the principles of labor welfare. So first is the principle of social responsibility. These are very easy. आपको बहुत easy लगेंगे आज ये क्योंकि आपने अगर पिछले 2 sessions attend किए हैं. So principle of adequacy of wages, principle of democratic value, principle of efficiency, principle of co-responsibility, principle of totality of welfare, principle of repersonalization, principle of accountability, principle of coordination or integration, and principle of timeliness. So these are the principles that we would be studying. Now let's start with the first one, that is principle of social responsibility. Okay, so अब देखो social responsibility principle क्या कहता है. अब हम किसके principles पढ़ रहे हैं? We are studying the principles of labor welfare. So everything would be related to or in the context of labor welfare only. Okay, so as per this principle, the industry has an obligation towards its employee to look after their welfare. तो social responsibility क्या कहता है? Principle of social responsibility says that it is the duty or it is the obligation of the industry. Okay, what क्या obligation है? To look after the welfare of the employees. ठीक है, और कई जगह ये भी लिखा गया है कि भाई एम्प्लॉयज के वेलफेयर के साथ साथ आप सोसाइटी का भी वेलफेयर कीजिए. सो इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो दिस लाइन यू शुड रिमेंबर दैट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द इंडस्ट्री हैज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर. भाई इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं आप उनके वेलफेयर के बारे में सोचें. ठीक है, और कई बुक्स में ये भी दिया गया है कि एम्प्लॉयज के साथ साथ आप सोसाइटी के भी डेवलपमेंट के बारे में सोचें. ओके, so just remember it because many times I'm telling you ये सारे principles आपको दे दिए जाते हैं, around 4 principles, और फिर उनकी definitions दे दी जाती हैं and then you need to match. ठीक है, कि कौन सी प्रिंसिपल ऑफ काउंटेबिलिटी की है, ओके, कौन सी एडिक्वेसी ऑफ वेजेस की है, कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है. Okay, so you have to remember this line. I think you should learn it and you should note it down that as per the principle of social responsibility, industry has an obligation towards its employees to look after their welfare. Now let's start the other principle. This is a very important one. ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, maximum times. So this is the principle of adequacy of wages. Now let's see what is it. Let's read the pointers one by one and understand that what is inside it for us. So this principle says that labor welfare is not a substitute of wages. भाई लेबर, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि लेबर वेलफेयर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ वेजेस. मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई एम्प्लॉयर बोले कि भाई मैंने बहुत सारी लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज कर ली हैं, अब मैं आपको वेजेस नहीं दूंगा. सो दिस कैन नॉट बी द पिक्चर. इट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट. आप वेजेस भी दीजिए, ठीक है, वेजेस तो वर्कर्स का राइट है ही, और साथ में आप लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज भी कीजिए. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहा हूं तो आपको वेजेस नहीं दूंगा. ठीक है, नाउ द वर्कर्स हैव द राइट टू एडिक्वेट वेजेस. भाई लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज आप करिए बट द वर्क उनको वेजेस तो आपको देने ही पड़ेंगे. ओके, द वर्कर्स हैव द राइट टू एडिक्वेट वेजेस बट वेजेस अलोन विल नॉट ब्रिंग द कमिटमेंट ऑफ द वर्कर्स. बट ये भी नहीं कि अब आप बोले कि चलो वेजेस दे तो रहा हूँ तो मैं लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज क्यों करूं, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते. दोनों ही केसेस नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट से दैट लेबर वेलफेयर इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ वेजेस, कि आई एम डूइंग लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज एंड आई वोंट प्रोवाइड यू वेजेस बिकॉज द वर्कर्स हैव द राइट टू वेजेस. Whereas it is said that wages alone are also not sufficient.
ठीक है. You have to do some welfare activities for your employees also. You have to do some welfare activities for your workers also. So they should go hand in hand. आप wages भी दो और साथ के साथ welfare activities भी करो. So there should be a combination of economic welfare, मतलब आप वेजेस दीजिए, उनको इंसेंटिव्स दीजिए, इमोशनल वेलफेयर, उनके इमोशंस का भी ख्याल रखिए, एंड सोशल वेलफेयर फॉर अचीविंग कमिटमेंट ऑफ द वर्कर. सो इन ऑर्डर टू अचीव कमिटमेंट, okay, so you should do welfare, labor welfare activities. You should take care of the economic welfare of the people that are employed under you, their emotional welfare and their social welfare for achieving their commitment. ठीक है, आप उनका कमिटमेंट ऐसे अचीव कर सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन सारों के कॉम्बिनेशन से. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ adequacy of wages. That this is the principal line that you need to remember, these both lines, that this principle says that labor welfare is not a substitute of wages. आप labor welfare को wages के साथ substitute नहीं कर सकते हैं, because the worker have right to adequate wages. आपको दोनों करने चाहिए, labor welfare activities भी और उनको wages तो देना ही चाहिए, because it's the right. Now let's move to the next principle. That is principle of democratic value. ये अगर आपने मेरे पिछले सेशंस अटेंड किए हैं, so this must be very easy for you. Democracy, what is democracy? That you have a right in taking decisions. Okay, whatever decisions are being taken for you, you have a say in that. So this is what democratic value tells. So this principle states that workers shall be consulted before formulating and implementing the labor welfare services. तो जो भी labor welfare, अब ये principles of labor welfare है, तो जो भी आप labor welfare services implement कर रहे हैं, okay, whatever you are making, whatever you are formulating, तो उनको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने से पहले यू शुड कंसल्ट द वर्कर्स, बिकॉज भाई वो वर्कर्स के लिए हो रही हैं, ओके, वो वर्कर्स पे उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दे शुड नो, ओके, एंड दे शुड बी कंसल्टेड दैट डू दे नीड दीज एक्टिविटीज, और ये हम करेंगे तो क्या वर्कर्स को उससे फायदा हो रहा है. सो दैट इज वाई कंसल्टेशन इज द की वर्ड हियर, दैट दे शुड बी कंसल्टेड, okay, before formulating or implementing any labor welfare activities or services. So the consultation and agreement of workers is necessary for the success of the labor welfare activities. तो अगर आप कंसल्ट करेंगे उनसे, ठीक है, जब आप लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज बना रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो इफ द वर्कर्स वुड बी कंसल्टेड, देन वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी ना, they would be more successful, because उनमें उनकी भी, वर्कर्स की भी हामी होगी, workers would also be satisfied and workers would also give a thumbs up, हाँ you can go for it, हाँ this is according to what we need. Okay, so that is why the consultation is necessary. So this is the principle of democratic value, and here consultation is the key word. Okay, now let's move to the next principle, principle of efficiency. This principle says that welfare activities and efficiency is related. Welfare activities helps in increasing efficiency of workers. भाई अब ये principle of efficiency क्या बोलता है? अब हमने we had read earlier also that whenever labor welfare activities are done, so it increases the efficiency of workers, right? Labor welfare activities leads to the increase in efficiency of workers. So here it is said that welfare activities helps in increasing the efficiency of workers. So this is the principle of efficiency. अब आप एक बात बताइए, अगर आप labor welfare activities करेंगे उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, तो जो अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ओके, सो यू वुड डू मेनी एक्टिविटीज, राइट, जस्ट वेट अ मिनट. हाँ, सो जैसे आपने उनको जैसे बैलेंस डाइट वगैरह प्रोवाइड की, ठीक है, यू ट्रेन देम दैट दिस यू शुड टेक, कि आपको बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, और कुछ गुडीज भी प्रोवाइड किए खाने पीने के लिए उनके, ठीक है, क्योंकि ये लोग, उन्हें दालों की इंपॉर्टेंस बताई, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई कि इससे प्रोटीन्स मिलते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग में हेल्प किया, okay, that this मतलब वो you should not have too many kids and all that things, उनको थोड़ा educate किया, right? So obviously indirectly ना उनकी efficiency भी increase होगी अगर आप उनको facilities provide करेंगे या आप उनके welfare के लिए activities करेंगे, okay? Again and again some call is coming, चलो leave it now. Then is the principle of co-responsibility. Now द लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज, ये भी बहुत ईजी है. को रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. सो द लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज शुड नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पार्टी ओनली, ठीक है, एक ही पार्टी, मतलब एम्प्लॉयर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए. बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेयर लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स और द लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज is not just the responsibility of one
one party, or is not just the responsibility of the employers or the management only. It is also the responsibility of workers. So a joint responsibility, a co-responsibility should come into the picture. So both the employers and workers should be responsible for it. Okay, so this is it. Then principle of totality of welfare. Now what does this principle says? This principle states that the welfare activities should spread throughout the whole organization and all hierarchies. मतलब भाई जो welfare activities आप कर रहे हो, जो भी labor welfare activities you are undertaking, that should spread throughout the all organization. ऐसे नहीं कि किसी कुछ part of organization में आप नहीं कर रहे हो और बाकियों में कर रहे हो. So it should spread across all the hierarchies of the organization. The employees working at all levels shall accept the total concept of welfare. तो जो भी employees हर level पे काम कर रहे हैं उनको भी ये totality of welfare या total concept of welfare को accept करना चाहिए. Okay, so this is that principle, the principle of totality of welfare. Now is the principle of repersonalization. repersonalization एक तो होती है personality. अब उसको अगर हम repersonalize करेंगे, so that means here it is focusing on development of the human personality. ठीक है, अब हम जब labor welfare के principles पढ़ रहे हैं तो obviously labor welfare का personality से क्या relationship है. So what this principle is saying is, according to this principle, the aim of labor welfare is the development of personality of an individual. ठीक है, तो labor welfare का aim क्या है? It is the development of personality of an individual. So it is really important to implement the labor welfare activities inside and outside the organization. ठीक है, तो labor welfare activities का क्या aim है? इस principle के according repersonalization, personalization से personality याद रखना, and मतलब development of the personality of an individual. This is how you can remember. So according to this principle, again I am repeating, the aim of labor welfare is the development of personality of an individual. कि labor welfare activities से what happens is the personality of an individual develops. So that is why it is really important to implement the labor welfare activities inside and outside the organization. तो ताकि personality का development हो labor welfare से, तभी labor welfare activities implement करना बहुत important है inside and outside the organization, intramural और extramural both. ठीक है, मैं आपको intramural और extramural activities का भी बताऊंगी, वो एक अलग सेशन में होगा. अभी आप ये inside और outside the organization से समझ लो कि labor welfare activities implement करनी बहुत अंदर भी और बाहर भी बहुत important है, क्योंकि the aim of labor welfare activities is the development of personality of an individual. So this is what this principle is saying. So now let's study the principle of coordination and integration. And now here also, so this is also based on the total concept. ये principle of coordination and integration भी total concept पे based है. What does it say is that a coordinate approach will promote a healthy development of the worker, okay, in his work, home and community. ठीक है, so एक coordinate approach, एक total approach हम अपनाएंगे, okay, which will promote a healthy development of the worker in his work, home and community. ठीक है, तो अगर हम एक सोचे, अगर हम total concept लगाएंगे, so what would happen is, so it would promote a healthy development of the worker in his work, home and community. अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम एक coordinated approach और एक integration से चलेंगे, so that would lead to the continuity of the labor welfare activities as well. Okay, yes. So this is the principle of coordination and integration. It is based on the total concept, and it says that a coordinate approach will promote healthy development of the worker in his work, home and community. तो ऐसे क्या होगा कि वर्कर का पूरा डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वर्क में भी, होम में भी और कम्युनिटी एज अ होल में भी. ओके, एंड दिस अप्रोच वुड लीड टू what it would lead to? It would lead to the continuity of the labor welfare activities. तो labor welfare activities होती रहेंगी. Okay, so this is it. Now let's see the next concept, that is the principle of accountability. अब देखो, इसको principle of evaluation भी कहा जाता है. So you need to remember this, क्योंकि कई बार ना ये चीजें दी होती है, and then you are asked that कई बार ये accountability दिया होता है, कई बार evaluation दिया होता है. So you should know that the principle of accountability and the principle of evaluation is one and the same thing. Okay, so what it states is, it states that the labor welfare activities shall be evaluated from time to time. So देखो, accountability is principle of evaluation. Now
what are we talking about? We are talking about the principles of labor welfare, right? अब इनकी evaluation का बात हो रहा है. When accountability is the principle of evaluation, so we are talking about evaluation of the labor welfare activities. So whatever labor welfare activities we are doing, they should be evaluated time to time. ठीक है, उनका time to time evaluation करना चाहिए high authority के पास. ठीक है, क्योंकि we should know ना whether they are successful or not. कई बार हो सकता है that the labor welfare activities are not successful, they are not contributing to the development of the workers, or they are not benefiting the workers, right? So that is why they should be evaluated from time to time, okay, so that we can know the success of the labor welfare activities. And why this evaluation is necessary? Because we should know that if the labor welfare activities are being successful or not. Okay, so this is the principle of accountability or the principle of evaluation. मतलब एक check रखना है, evaluation करना है. जैसे आप जो भी पढ़ते थे, when you were students, you used to study, and you are now also students, but when you were in school, okay, आपके term, end term, mid term, end term, ये सब exams होते थे, unit tests होते थे. क्यों होते थे? आपको पढ़ा दिया जाता था, ठीक है, और फिर टीचर्स चेक करते थे ना, दैट डू यू नो दैट हमने पढ़ा तो दिया है, बट is it benefiting you, is it going in your head, are you studying? So in the same way labor welfare activities also need to be evaluated. ठीक है, कि are they causing any are they successful, or are they causing any benefit, are they leading to any benefit or development of the workers? So this is the principle of accountability or principle of evaluation. Okay, now let's come to the last one, that is principle of timeliness. This is also very easy, time से काम होना, ठीक है, और time से, now again we are reading the principles of labor welfare. So timely or timely implementation of the labor welfare activities should be there. So this is what it pays focus on. So the labor welfare activities should be done when they are needed. The problems and requirements of the labor shall be assessed, and timely implementation. So here timely implementation is the key word. Timely implementation of the labor welfare activities should be done. So this is what it states, okay, कि भाई आप timely करो, जो भी labor welfare activities करो timely करो. आप assess करो कि labor के needs क्या हैं, okay, what are the needs, what are the problems of the labor, okay, you should assess them and then formulate solutions, okay, and then timely implementation should be done. For example, 30 women are working in a construction site, ठीक है, 30 women नहीं, सोचो 100 women are working, ठीक है, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे. तो अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कई बार काम में नहीं आते. सो यू शुड अंडरस्टैंड द नीड. तो आप आसपास क्रश खोल सकते हो, राइट? सो दैट इज वाई. अब देखो, अब अगर ये एक्टिविटी जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, ठीक है, जब ये विमेन चली गई और तब आपने क्रश खोला, तब उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर. अगेन लेट्स रीड what is principle of timeliness, that there should be timely implementation of the labor welfare activities. We should assess the needs and the problems of the workers, formulate solution, and then timely implement the labor welfare activities. The labor welfare activities should be done when they are needed. The problems and requirements of the labor shall be assessed, and timely implementation of the labor welfare activities should be done. So this is the principle of timeliness that is there. And yes, again, if you have liked this video, then press like please. It is very important so that I can come up with videos again and again.